आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? बस मुझे तो ये 6 बिंदु दिख रहे हैं ऐसे गोल, और क्या मतलब इसमें और क्या मैं कल्पना कर सकती हूँ ये। मैम वो तो आप सोच रहे क्या और आपको मैम देख पता लगता है इसमें। मेरी इमेजिनेशन ज़ीरो हो रही है, आप ही बताओ मैम कुछ। ये आप वैसे इमेजिनेटिव पर्सन हो, आपकी पर्सपेक्टिव होती है उससे। बाकी मैम ये हमारी रिलेटेड लाइफ ओनली कि मैम जैसे हम अपनी सिचुएशंस को किस तरीके से हम देखते हैं, लाइफ की है वो प्रॉब्लम्स को। ये मेरा माइंड है और ये सारी प्रॉब्लम्स हैं मेरे आसपास। मैम वही है कि मैम अगर आप अपने आप को बड़ा होकर देखते हो तो आपकी प्रॉब्लम्स छोटी है, आप किस तरह अपने आप को देखते हो डिपेंड कर रहे हैं। हाँ जी बेटे, क्या दिखा रहे हैं आप? पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट। इसमें मेरे को बताना है क्या दिख रहा है? यस मैम। ये 2 लड़के दिख रहे हैं एक दूसरे की तरफ देखते हुए। यस मैम, आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो, ठीक है, और आप बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को देखते हो, मतलब डिटेल्स में देखते हो, बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते हो हर समय, ठीक है, और मतलब बहुत अच्छे से मतलब सबके साथ घुल मिल जाते हो। What do you see in this picture? एक अंकल ऐसे बैठ के सोच रहे हैं क्या कुछ? Then you have a very creative mind. You analyze something, you analyze anything very fast because this is not in this picture, but you have very suggestive mind. ओके, वैसे ये क्या है? Here we can see a man having something in his mouth, अच्छा and अच्छा। here a woman's picture, like a shadow of a face. आपको क्या दिख रहा है? ये बच्चा दिख रहा है ऐसे करके। मैम आप ओपन टू एक्सपीरियंस्ड हो और एक्सट्रोवर्टेड हो। ये बेटे मेरे को इसमें एक लड़का दिखाई दे रहा है, बच्चा। मैम आप ओपन टू एक्सपीरियंस्ड हो और एक्सट्रोवर्टेड हो और गुड थिंकर हो। हाँ, एक्सट्रोवर्ट। सही है आपका ये पर्सनालिटी टेस्ट। गुड। नो योर पर्सनालिटी। वी नीड इट। Parts of body, aorta. From this, as oxygenated blood contains nutrients and oxygen. When oxygenated blood reaches different parts of body, it collects the nutrients and oxygen from blood and gives it waste material and carbon dioxide. Okay, and where does this deoxygenated blood come from? When the oxygenated blood reaches like parts with the carbon dioxide and waste materials, it contains deoxygenated. ठीक है. Okay, good job. The plant's most important work is to producing seeds from which the new plants can grow. In the center of the flower, there are produced the seeds from which the new plants can grow. These are covered by an outer layer of colorful petals. There are green leaf-like structures at the base of a flower. These are known as sepals. They protect the flower when it is a bud. The male part of the stamen is made of identical filaments and smaller net at the top called anther. Where is the anther? Anther. हाँ, ठीक है. Okay. So what is the role of the anther? Someone else can explain. So it produces pollen grains. Okay. And direct pollination. Another flower Okay. is known as cross pollination, and direct pollination is like this pollen grain it will be the same time. Great. Perfect. Very nice. Thank you, sir. Anjali. Good morning, ma'am. Good morning, sir. Good morning. Today I am going to tell you. Today I am going Ah, to tell nice. you about nervous system. The Okay. nervous system uses tiny cells. Are you explaining the nervous system? Don't be nervous. ठीक है? हाँ. The nervous system uses small cells named as neurons. Neurons are the nerve cells that send messages all over your body and to allow to do Actions? like spinal nerve and motor nerve. Okay.
So, what kind of reactions are there with the nervous system? Two types of reactions I remember. Voluntary and involuntary. Right? So, what are these two? Have you heard of the names voluntary reaction and involuntary reaction? What are these? Good morning, ma'am. This is the rainwater harvesting project. It involves purification and and it will also used for household purposes. For example, the rain will be dropped here, and there are channels here, and the water will go to that side, and there is a tank, and the tank will supply water to for various purposes like household, irrigation. You can use it for drinking also. If you will mix chlorine or any other thing for purification. This is it. Now this is the water purifier. We can put dirty water in here and it will pass all through the stages and we will get the clear water here. We can see a clear water. We can see a model here. We have put it dirty water here and it's coming down clear. And then we can open the tap and take the water. Good morning, ma'am. Good morning. Today I am telling you about human digestive system and excretion system. When we eat the food, our teeth chews the food and our tongue mix it with saliva to taste them. Then it goes through the food pipe in the stomach. The stomach mainly rolls at mucus and hydrochloric acid. The hydrochloric acids break down the enzymes and the mucus protects the stomach. Then it goes to the human intestine. Human intestine consists of bile juice, pancreatic juice and it breaks down the carbohydrates. And then intestinal juice, all the unused particles take it in large intestine. Large intestine collect water from the unused substance and take it to the vena cava and aorta. They take the kidney, all the unused substance, and the kidney filter it. Then it goes through ureter in the bladder. Bladder take the unused substance for temporarily, and then urethra take down to the through ureter. Thank you. वेरी गुड एक्यूबर्ड के हेड बॉय और हेड गर्ल काफ़ी जिम्मेदारी संभाली हुई है इन्होंने स्कूल की। हाँ जी, इधर कौन है? Good morning, ma'am. Good morning. This is respiratory system in our body, and this main organ is the lungs, and its main function is to inhale the oxygenated blood and exhale the carbon dioxide, and provide the all parts of the body. All the parts work together to move the oxygenated blood to the all parts of the body. Thank you. Good morning, ma'am. This is the model of function of an air conditioner. The air conditioner consists major of three components: the evaporator, the condenser, and the compressor. In the traditional ACs, also known as the Windows AC, they consist all the three components in a single unit. And in the split ACs, as the name tells that, it is split into two units: the indoor unit and the outdoor unit. In the indoor unit, it consists of the only a single component, the evaporator. And in the outdoor unit, it consists of two components, the condenser and the compressor. Any questions? मतलब तुम अपना एसी वगैरह खुद ठीक कर लोगे, है ना? चल गया। ये देखो रीचा मैम बैठे हैं, रेनू मैम। यही करता धरता है, सबसे पहले हर आदमी इनसे मिलता है फिर आगे जाता है। और ये हमारे खजांची साहब, और इनकी तो क्या कहने, मैंने पहले भी कई बार बताया है, ये ना हो तो ब्लू बर्ड स्कूल नहीं मैम, चले ही कोई ना। बात नहीं है, आपके बिना भी नहीं चल सकती। सबकी अपनी अपनी वो है। नहीं, ये ऑलराउंडर देखिए- मैम है ना, देखिए ऑलराउंडर मैम, भी तो होता है जब कोई। तक टीम वर्क नहीं होगा तो कुछ नहीं हो सकता। टीम वर्क इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। सो टीम वर्क बहुत ज़रूरी है। तिरंगे के रंग में रंगा हुआ ब्लू बर्ड। हाँ जी बेटा, आप बताओ आप क्या बना रहे हो?
क्या है ये, वर्किंग है? दिखाओ कैसे गार्बेज उठाते हैं। यस मैम। वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा है तो।